Hello everyone, welcome back once again to Aakash BYJU'S NEET YouTube channel. I am Pushpendu and I am back again with the chapter Locomotion and Movement and this is session 3. ठीक है, तो third session की बात करेंगे. Last session we have discussed about the structure of the muscle fibers, right? Sarcomere, sarcoplasmic reticulum, सब कुछ डिटेल में पढ़ा है. अब now we will try to see कि movement कैसे होता है, right? This session. Okay, let's quickly start this session. Okay, one quick disclaimer that this is a recorded session. I'm keeping it recorded because you know ये त्योहार का time चल रहा है. It's a time of Diwali and all. Most of the people will go for holidays. So do not restrict yourself to the timing. You can just watch it whenever you want. आपको जब भी time मिले आप इसको देख लेना. Fine. So let's go ahead with this. Please download this app so that you can know what we are doing, how we are doing, what is our focus, how we do all these stuff, right? So ANTHE's examination, just watch it out. This is something great because the first prize here is a visit to NASA and that's free of cost. See the dates and register yourself. These are the sessions which are going on in the same channel. Do subscribe the channel so that you know. And there's a link in the description where you can there's a survey form for the students, so you can fill that up, scan this so that you can be directed to NEET Aakash digital platform. You get all the opportunities over there, and nevertheless you should like, subscribe, comment and share this session. Let's go ahead with a quick hiking. One of my favorite thing that I do. I always try to do it if I'm getting time, of course. So hiking is something great. It's so refreshing. It's a great way of exploring yourself as well as nature, right? So when we do hiking, okay, so what happens, it's a form of exercise. It's a very good form of exercise. There's a lot of movements of different parts of our body. ठीक है? Not only hiking. अगर मैं सिर्फ ये करूँ, इस पे भी बहुत सारे मूवमेंट हो रहा है, मस्कुलर मूवमेंट. सो आज इस मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे. सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट विच इज हैपनिंग. वी हैव स्टडीड अबाउट सम वॉलंटरी मूवमेंट, सम इनवॉलंटरी मूवमेंट. मतलब कुछ मूवमेंट जो आपके कंट्रोल में है, कुछ मूवमेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं है. ठीक है? सो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, आपका कॉन्शियस एफर्ट के बिना भी कुछ मूवमेंट्स कंटिन्यूअसली हो रहा है, जैसे द चर्निंग ऑफ योर स्टमक मसल्स. यप, इट्स ऑलवेज हैपनिंग, है ना? सो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. इट्स ऑलवेज हैपनिंग. इट्स अ इनवॉलंटरी एक्शन, राइट? वॉलंटरी, if you ask me to flex, I can do it like this. Fine? Chalo. Now, the question, of course, that we are going to answer in today's session is how do these movements happen? अच्छा, बीच-बीच में कुछ questions करते रहूंगा. Keep typing on the chats. Let me see if I can see this session live myself also. I'll try to participate in the chat with you. Let's hope that yes, I can also participate there. But do keep chatting and keep asking questions there, right? Help each other for the doubts. I'll try to see all the doubts and maybe next session I can answer all of them. ठीक है? So, are you all clear about the sarcomere? Are you all clear about the light band, dark band? Are you all clear about the actin and myosin? Filaments. Very, very important क्योंकि इसके ऊपर बेसिस करके सब कुछ है ना? Muscle contraction is what we are going to study right now. Let's see. How does a muscle know when to contract? कैसे पता लगेगा मसल को कि अभी कॉन्ट्रैक्ट करना है? Well, कुछ ऐसे हो सकता है कि we are sending the signals. We are trying to guide our senses to do that. जो voluntarily कर रहे हैं, कुछ चीजें automatically हो रहा है because of the control centers. Recall the central nervous system. You must have studied in your lower standard also. 11th में भी है central nervous system के बारे में. Brain, the central nervous system, brain and spinal cord. Here you can see the spinal cord, right? So the central nervous system processes information based on the stimulus that our various sense organs are receiving and directs the body to perform its function. ठीक है? You know that. Very important. ये मैंने पढ़ाया है. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं. Let's revise once again quickly. चलो. So dendrite.
ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर जो प्रोजेक्शन है, दीज आर द डेंड्राइट्स, यहां से सिग्नल्स सेंस करते हैं, रिसीव करते हैं। दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द सोमा, द सेल बॉडी रादर, दिस लॉन्ग पोर्शन दैट इज द एक्सॉन। एंड दो टाइप ऑफ एक्सॉन हो सकते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड मतलब जहां जिसके बाहर ये माइलिन शीथ है, और जिसके बाहर नहीं है उनको नॉन माइलिनेटेड बोलते हैं। फाइन। और एक्सॉन टर्मिनल अब देख रहे हो कि यहां पे भी ऐसे ब्रांचिंग होकर रखा है, और इसके एंड पे कुछ चीजें होती है जिसके बारे में आज हम जरूर पढ़ेंगे, एंड बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे हो रहा है। करेक्ट? सो द डायरेक्शन ऑफ the electrical impulse, that the direction of travel of electrical impulse is from, of course, the dendrites to the axon terminal. Got it? Okay. Now, signal for the muscle contraction. Muscle contraction के signal के बारे में आगे बात करें। ठीक है, देखो, motor neurons are the a type of neurons which carries the electrical impulse कहाँ से? From the central nervous system to the muscles. ठीक है, यहां से लेके मोटर न्यूरॉन्स कहां ले जा रहे हैं? ये मसल्स। लेट्स इमेजिन, सिर्फ ऐसे कॉन्शियस नहीं, अगर मैंने कुछ गरम टच कर दिया, इफ आई टच समथिंग हॉट, नॉट ऑटोमेटिकली ये चीज होगा, रिफ्लेक्स, है ना? यहां पे भी मोटर न्यूरॉन्स विल सेंड द सिग्नल टू माय मसल्स कि चलो, यू नो, रिमूव योर हैंड, सो दैट दैट एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड क्विकली। लेट्स मूव अहेड नाउ। Okay, signal for muscle contraction is what we are studying. एक यूनिट के बारे में बात करता हूं। It's called the motor unit. What does it comprise? मोटर यूनिट बनते कैसे? एक तो है मोटर न्यूरॉन्स है, प्लस मसल फाइबर भी है विच इज कनेक्टेड। मसल फाइबर इट इज कनेक्टेड विथ, तो ये मिलके बन गया मेरा मोटर यूनिट। दिस इज द मोटर यूनिट, द मसल फाइबर्स, ओके, और मोटर न्यूरॉन जो है मिलके मोटर यूनिट बन गया। अब देखो, एक सिंगल मोटर न्यूरॉन, यू कैन सी इन द पिक्चर, कैन फॉर्म ब्रांचेस, ईच ऑफ विच कैरीज इंपल्स टू द मसल फाइबर। ब्रांच हो सकते हैं और हर एक ब्रांच सिग्नल ले जाके कहां पे? मसल फाइबर को डिलीवर कर सकते हैं। सो मोटर यूनिट्स कंसिस्ट ऑफ द मोटर यूनिट, द मोटर न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर विद विच इट इज कनेक्टेड। क्लियर है? ये मोटर यूनिट समझ में आ गया? आगे बढ़े। दिस इज अ क्विक रिकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर ये पढ़ के नहीं आए हो, इफ यू हैव नॉट रिवाइज दिस, देन तो बेटा मुश्किल है ना? एक बार जल्दी से मैं बता देता हूं कि क्या क्या हमने पढ़ा था। चलो, आई विल डू वन थिंग, आई विल आस्क द क्वेश्चन, आप लोग चैट पे इसका जवाब देना जल्दी से। रैंडम मैं पूछता हूं, आई बैंड, व्हाट इज आई बैंड? टेल मी, चैट पे बताओ। आई विल चेक द आई बैंड, आई विल चेक द चैट, ऑल ऑफ यू, आई विल गिव यू सम टाइम। ये आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम मैं नहीं दिखा रहा हूँ, एक एक्चुअल नियर अबाउट सिमिलर स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ विच इज एक्चुअली देयर द मसल फाइबर्स। उसको देख के यू ट्राई टू टेल दीज आंसर्स। आई बैंड क्या था? रिप्लाई ऑन द चैट। नेक्स्ट क्या पूछ सकता हूँ? आई बैंड, ओके। अच्छा, ए बैंड बताओ, टेल मी व्हाट इज ए बैंड। जल्दी से आंसर देना। आई बैंड, बैंड नॉट लाइन, आई बैंड, ए बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड एंड आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है ना? नेक्स्ट व्हाट आई शुड आस्क इज, चलो जेड लाइन, टेल मी व्हाट इज जेड लाइन, व्हाट इज जेड लाइन, एंड ऑल्सो नेम, टेल मी जेड लाइन, ये नेम आया कैसे है? जेड, Z, this is the hint, this is the hint, है ना? Z लाइन बताओ। इसके बाद आप बताओ M लाइन, M लाइन, ठीक है। और दूसरा बताओ H बैंड, H बैंड क्या है? फाइन, आप रिवाइज कर लो जल्दी से और एक दूसरे को हेल्प करो, चेक कि कोई गलत आंसर दे रहा है नहीं। फाइन, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक, जल्दी से मैं बता देता हूं। आई बैंड मतलब जो लाइट बैंड है, ठीक है। ए बैंड जो डार्क बैंड है। आई बैंड के बीच में जो डिवीजन है जिगजैग, जेड बैंड,
उसको जेड लाइन कहते हैं। एम लाइन जो कि ए बैंड के बीच में है, और जो पोर्शन जहां पे एक्टिन ओवरलैप नहीं है, सिर्फ मायोसिन है, दैट इज द एच बैंड। और दोनों जेड लाइन के बीच में जो पोर्शन है, द पार्ट ऑफ द फाइबर, दैट इज नोन एज द सर्कोमियर। ठीक, चलो आगे बढ़े। अब रिवाइज हो गया तो आगे बढ़े। नाउ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और द मोटर एंड प्लेट। नाउ द प्लेस वेयर एंड पॉइंट ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स मीट, एंड पॉइंट ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स जहां पे मिल रहा है किसके साथ, द सर्कोलेमा ऑफ द मसल। एंड पॉइंट ऑफ द मोटर न्यूरॉन मीट्स द सर्कोलेमा ऑफ द muscle fiber. That's known as, that is the called the neuromuscular junction or motor end plate. Okay, see here a zoomed in version of it. So here this is the place, you can see the end point of the motor neuron and you see the sarcolemma, okay, of the muscle, and this is called the neuromuscular junction or the motor end plate. ठीक, easy है, आगे बढ़े। छोटा सा ही सेशन करेंगे, नो वरीज। अब आपने क्या एसिटाइलकोलाइन के बारे में कभी सुना है? व्हाट इज दिस? समथिंग कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर देयर। अब सुनो, ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन में there are vesicles which contain the neurotransmitters. I repeat, in this junction there are vesicles. ये जो दिख रहा है ना गोल गोल स्ट्रक्चर्स, इनके अंदर कुछ केमिकल्स रहते हैं which are neurotransmitters, and one of them is example is acetylcholine. Very very important. और ये वही न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो इंपल्स ट्रांसमिट करने में हेल्प करेंगे। नाम से समझ में आ रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम न्यूरोट्रांसमीटर्स। करेक्ट, समझ में आ गया? आगे बढ़े। नाउ लेट्स सी, यहां पे आई विल शो यू। देखो, these vesicles are, इसके मेम्ब्रेन के साथ it is merging, because of which it will try to release these neurotransmitters. कहां पे? sarcolemma में रिलीज हो जा रहा है ना? And do you see there are some receptors over here? See here, neurotransmitter is released and these are the receptors. Receptors, the neurotransmitter molecules will bind to the receptors on the sarcolemma. Okay? Now this action, or this which has happened right now, which I have seen, the neurotransmitters binding to the receptors present in sarcolemma, what will happen? It will generate an action potential. एक action potential generate करेंगे muscle fiber में, in the muscle fiber. Got it? Well, very good. So what we have till now is action potential generated by the, here it is acetylcholine, or rather on the whole group you can say the neurotransmitters. अब आगे बढ़ते हैं. This is going to be interesting now. Action potential is nothing but an electrical impulse which will try to propagate, which will actually not try, it will propagate on the muscle fiber. वो move करेंगे muscle fiber में, ठीक है? अच्छा, ये movement कैसे होता है and all this stuff we will study in detail in a different chapter, ठीक है? न्यूरॉन्स के बारे में एक्स्ट्रा जब एडिशनल पढ़ेंगे, न्यूरल ट्रांसमिशन एंड ऑल, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। बट इतना जान लो कि जस्ट ये चार्जेस के बेसिस पे इट कैन मूव द सिग्नल, द इम्पल्स कैन मूव, ठीक है, इट कैन ट्रांसमिट। ओके, द एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली spreads on both sides of the neuromuscular junction, you can see here. So electrical impulse is here, this the action potential, and spreads from the neuromuscular junction. जिस जंक्शन में आया था उधर से स्प्रेड होते रहते हैं। Okay. Sarcoplasmic reticulum, recall, you know about it, right? Sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber is called, this is the endoplasmic reticulum which is present in the sarcoplasma. Okay? So, ये endoplasmic reticulum है। मतलब, अब ये भी मैंने पढ़ाया था लास्ट सेशन में कि that the sarcoplasmic reticulum has a storehouse बहुत ज़्यादा of what? Calcium ions. Calcium ions are there, ठीक है? इसका काम क्या है बताएंगे, just wait for some time. See, because of this signal which has come, अब सिग्नलिंग समझ में आ गया, न्यूरो जो
न्यूरोमैस्कुलर जो जंक्शन है वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो गए, रिसेप्टर्स ने रिसीव कर लिया, दिस इज बीइंग ट्रांसमिटेड ऑल थ्रू आउट द सार्कोप्लाज्म. And sarcoplasm में what I'm saying that there is excessive amount of the sarcoplasmic reticulum, and there's a supply of there's a huge storehouse of calcium ions. ठीक है. Now release of calcium ions. So action potential is causing the release of the sarcoplasmic calcium ions. ठीक. Now these calcium ions that you can see ultimately bring about the contraction of the muscles by means of cross bridge cycle. अब पढ़ना है हमें cross bridge cycle. ये calcium ions bring about the cross bridge cycle. ये क्या है? अब देखो. Watch out. Actin filaments and the myosin filaments. कैसे काम करता है? Let's see. Quickly recall. Just recall. You know you have the actin, F-actin. दो strands helically bound. उसके ऊपर से दो you have the troponins which is distributed over what? The tropomyosin. They were covering up the active sites of the actin filament. अब आएगा मजा. Active sites अब तक without any stimulus, without any impulse, without any signal was normally being covered, protect किया गया था. ठीक है. Now what we see, यहाँ पे myosin head दिख रहा है, and myosin head में क्या था? ATPase enzyme, right? It acts as an ATPase enzyme. अब the actin filament has binding site for myosin. Actin filament has binding site for myosin. Okay? अब देखते हैं. So myosin binding site must at the resting state. State 1, अगर resting state जब कुछ stimulus नहीं है, resting state है, तो वहाँ पे what is happening? The myosin binding sites are masked at the resting state. वहाँ पे masked है. Myosin binding sites मतलब वो कहाँ पे? Actin में. तो ये masked है. तो myosin bind नहीं कर सकता. Myosin cannot bind at this state. And how it is being masked? The tropomyosin is actually masking it, and troponin is helping the tropomyosin to be at their state. ठीक है? Okay. Fine. Now see, during action potential, जब action potential आ जाता है, जब action potential आ गया, then the calcium binds to troponin causing conformational changes. ठीक है? It will cause conformational changes. During action potential, calcium is going to bind to troponin. ध्यान से सुनो. Calcium bind कर रहा है कहाँ पे? Troponin. Troponin क्या कर रहा था? Troponin was holding on to tropomyosin so that tropomyosin is covering the active sites, or rather the myosin binding sites of actin filaments. ठीक है? So conformational change हो गया. Conformational change हो गया मतलब तो बेटा और bind नहीं कर सकता. It cannot bind. It cannot keep itself bound, right? So these ions will bind to the troponin molecules and bring in conformational changes in troponin. तो क्या होगा? Myosin binding sites will be exposed. So troponin का conformation change हो गया. It will not be able to hold on to tropomyosin. Tropomyosin अगर hold on नहीं होगा, so it cannot cover the binding site. So it will be removed. It will dislocate from there, and then what will happen? The binding sites, the active binding sites will be exposed now. समझ में आया? एक बार recall करते हैं. Let's try to recall. Think about it. कैसे हुआ ये? Starting में we had the junction जहाँ से neurotransmitter release हुआ based on some signal. Now neurotransmitter was released which was spread across the sarcoplasm. वहाँ पे enough amount of endoplasmic reticulum है which has a lot of storehouse of calcium ions. Calcium ions will be released in huge amount. Calcium ions can bind to troponin. When calcium ions are binding to troponin, what is happening? Conformational change. Cross कर रहा हूँ मैं. Conformational change. Now troponin cannot hold on to tropomyosin, right? Now tropomyosin will not be able to keep itself bound. यहाँ पे जो था, right? It will not be able to keep itself bound and cover the active sites. So hence what is happening?
it will expose, the end result is exposure of the myosin binding sites. Wow, nice. अब क्या होगा? Recall myosin molecule, ये आपको पता है कि head, right? Actin binding sites, myosin ATPase sites. You can see here. Fine. Now the myosin head has actin binding site and the ATPase site. So that means that clearly indicates that it can bind to hydrolyze ATP molecules and produce ADP and phosphate. तो ATP hydrolysis होगा यहाँ पे because है ATPase. So you know the reaction, ATP bind करके ATP अगर hydrolyze होता है तो ADP plus phosphate will be released and a huge amount of energy is released and this energy is required for your muscular movement. तो अब समझ में आ रहा है कि हमारे body में even when we sleep, when we do not do anything, then also a lot of energy is required. We should always have enough amount of energy so that our body keeps running. है ना? Okay. Now myosin head binding ATP. See here. अब myosin head, क्योंकि actin में binding sites जो था, those are now exposed, so myosin bind करेंगे, right? Because it had myosin binding sites. So myosin head will go and bind. It has the ATPase, so it will bind to ATP and also the myosin head catalyzes the hydrolysis of the bound ATP to ADP and phosphate. ठीक? और remember, इससे बहुत energy निकलता है. It releases a lot of energy. So myosin head is, charged up. बहुत सारा energy है वहाँ पे. So what is going to happen? It's kind of a slingshot. It's ready to go, and myosin head hydrolyzes ATP and is full of energy. What you will see, myosin head can now bind to actin. Myosin head can bind to actin. It has the binding sites. अब क्या होगा? Yes. It will pull the actin filament. It will pull the actin filament. बीच में जो जगह था ना, in the sarcomere, so वो जगह close होते रहेंगे. So that, because अभी देखो कम कर रहा हूँ मतलब जगह तो होना चाहिए. So it was somewhat like this. अभी ऐसे हो जाएगा. Right? It's moving. So इतने सारी चीजें simultaneously हो रहा है. Brilliant, right? हाँ. अभी इसको मेरा लेफ्ट साइड की तरफ अभी इस पिक्चर में पुल कर रहा है. ठीक? So it's like, do it, slingshot. Okay? So myosin head pulls the actin filament and what will happen? So ADP and phosphate will be released. मतलब वो खाली हो गया. Now that head is again ready to bind to another ATP molecule, get itself charged and bind to the actin bind to its active site or rather binding site which is there on actin and again perform the pulling movement. So ये होता रहता है. This keeps continuing and myosin detaches from the actin filament as I showed you. So myosin hydrolyzes the ATP and again it can bind and do the thing continuously. Fine? समझ में आ गया सबको? So good. So it was, I wanted to keep this session very short क्योंकि ये बहुत important है दो चीज़ें के लिए, क्योंकि ये important है और त्योहार के मौसम में ज़्यादा माहौल में ज़्यादा आप टाइम नहीं दे पाओगे. इट्स ओके, बट छोटा छोटा एटलीस्ट पढ़ाई करना ज़रूरी है सो दैट वी कैन कीप आवर पेस ऑन. ठीक है, थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते रहेंगे तो फिर वी विल स्टे इन टच रादर देन एक हफ्ते का अगर ब्रेक हो जाता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस ऑल ऑफ अस टू ब्रिंग बैक आवरसेल्व्स. सो आज के सेशन के लिए इतना ही. सो एक बार सुन लो कि क्या क्या करना है आपको. अब तक जो मैंने पढ़ाया इंपॉर्टेंट पोर्शन, पहली बात तो फर्स्ट सेशन में जो जो चीज़ें थे वो ओवरऑल लुक था, इंट्रोडक्शन था, बट सेकंड एंड थर्ड सेशन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज मैंने एक्चुअल मूवमेंट कैसे होता है वो मैंने पढ़ाया. आई हैव टॉट यू दैट एंड द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू डू नॉट नो द स्ट्रक्चर देन यू वुड नॉट अंडरस्टैंड टुडेज सेशन. So keep revising, keep practicing a lot of questions, and yes, keep learning. Thank you so much. I'll see you in the next session.